वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा सफ़र एक बहुत ही खूबसूरत और हिस्टोरिक होने वाला है इंशाल्लाह। हम आज नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडियन सिनेमा जाएंगे। ये म्यूज़ियम का इनाग्रेशन जो 2019 में हुआ है और बाय अवर ऑनरेबल पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी। जो म्यूज़ियम अब हम जा रहे हैं वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है गुलशन महल जो 19th सेंचुरी का हेरिटेज बंगलो है और दूसरा है मॉडर्न ये हम जसलोक हॉस्पिटल के पास पहुंच चुके हैं। अब जसलोक हॉस्पिटल से रास्ता देखना है कहाँ जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे लोग सीधा डायरेक्ट ले जाते हैं म्यूज़ियम को, बट एक्चुअली में बताते नहीं कि किस डायरेक्शन में जाते हैं करके। सो मुझे भी अच्छे से पता नहीं है, तो फिर मैं किसी से पूछती हूँ कि कैसे जाना है करके। और ये है अंबानी की बिल्डिंग जो ग्राफ से दिख नहीं रही है अभी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? यहाँ शायद से कुछ काम चल रहा है। ये है जसलोक हॉस्पिटल। और मैं उसके एग्जैक्ट सामने खड़ी हूँ। अब मुझे यहाँ से रास्ता नहीं पता। तुम चुटकुले बड़े अच्छे मारते हो। गुड जो पंजाब नेशनल बैंक के एग्जैक्ट सामने ही है, शायद यही होगा। सो फाइनली गाइस हम लोग सिनेमा वाला म्यूज़ियम पहुंच गए हैं। बहुत इजी रूट है, मैं आपको बहुत इजी रूट बताती हूँ। सफ़ाया का जो सेकंड गेट है ना, उसके थोड़ा सा आगे चले जाओ, ये म्यूज़ियम आपको दिख जाएगा। और यहाँ की जो टिकट है पर पर्सन की वो 75 रुपीज़ है। और ये शायद से म्यूज़ियम का मैप है। ऑडी 1 टू गुलशन महल। सो गाइस हम अभी गुलशन महल में आए हैं। So, as I said, 80% of Munna Bhai MBBS was shot here, right? It's converted to a hospital and this was also used as Munna's house. भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। Okay, so I'll introduce myself again. My name is Nikhilesh Bendre and I will be giving you a tour of Gulshan Mahal and the glass building over there. So, we are in the first section right now. And this talks about precursor to cinema. Now, cinema as we know it today is very different from cinema when it started. In fact, films back then didn't have any story or narrative, so they were called actualities. Why? Because they were everyday events captured in camera. So they were called actualities, and their duration was over a minute or two. That's it at max. And then in 1895, Lumiere was 10 films. Now the first film screen was the arrival of a train. Now it simply meant train arriving on the platform. But because people had never seen a film before, they thought that the train would actually run them over, but that did not happen. And the next film was workers coming out of the Lumiere factory. So the Lumiere brothers had placed a camera right outside their factory. And when people started coming out, they would record them. Now this became so popular that by 1896 they started sending representatives all over the world. And Maurice Siesta, on his way to Australia, he stopped in Bombay. And that day is screen 6 of the 10 films at Watson's Hotel. It's still there, right? It is in a dilapidated condition today. But that's where 6 films were screened. And that's where Indians, or at least those from British, they watched films for the first time. But there is, okay, so 1899 में H.S. Muralidharan ने, he was the first Indian actually to make actualities or motion pictures as they were called. But it is debatable because it is said that he was present at Watson's Hotel in 1896. However, ये भी कहा जाता है कि Watson's Hotel के बाहर ही
ये लिखा गया था कि Indians and dogs not allowed. So it is still debatable whether he was actually present on the screen or not. But in 1899 he made two films. एक बंदर का नाच और दूसरी दो रेसलर्स के बीच की जो मैच थी उन्हें सावे दादा कहा जाता था, उसे उन्होंने कैमरा में रिकॉर्ड किया. A big businessman. He owned a lot of theatres in Calcutta. He was a distributor, producer, and much more. Hira Lal Sen was also one of the early filmmakers from that period. In fact, he was present at the Delhi Darbar, which took place in the year 1911. So, King George V and Mary Teck were the emperor and empress of India. So, when their coronation happened in 1910 in Britain, simultaneously a similar ceremony took place in India. And it happened in Delhi. And they arrived in India via what we now call the Gateway of India. So this event is still available on the British Pathways YouTube channel. And a lot of people who were there as cameramen and they would later become the early filmmakers in India were present. One of them was Hira Lal Sen. Now, this slide over here, it talks about the transition from tents to palaces. So पहले फिल्में टेंट्स में देखे जाते थे, राइट? आज जो कंप्लीट स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है, they didn't exist back then. Over here are some of the old film theatres. Royal Opera House is still there, लेकिन अब ये प्ले थिएटर है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी प्लेस के शोज होते रहते हैं. Eros is under construction and has been acquired by IMAX, so it will be revamped and will be open for people. Novelty was here in Grant Road itself, but has been demolished. And now they've built a tower on it. So we have Regal in Colaba. Now Regal was the first air-conditioned theatre that we had in India. So these are some of the old theatres from that period. Of course, today we have multiplexes, but back then these were single-screen theatres. And ये जो अपने entrance में आपके आसपास ये जो instruments देखे होंगे, ये सारे और ऐसी कई तस्वीरें जो हैं पूरे प्रैक्सिनोस्कोप के इर्द-गिर्द लगाई गई. Now if I spin this, ऐसा एक galloping horse का illusion create होगा. And that's exactly what these instruments would do. There is a similar instrument over there. एक ऐसा illusion create हो रहा है कि जिससे ये लगता है कि as if the bird is trapped in the cage. Now, लूमियर ब्रदर्स ने जो फिल्में बनाई उनमें तो कोई नैरेटिव था नहीं, उन्हें एक्चुअलिटीज़ कहते थे और उनकी ड्यूरेशन बहुत कम थी, लेकिन फिल्मों में नैरेटिव आया था. तो 1902 में वहाँ उसका फर्स्ट. So in 1902, A Trip to the Moon came out, and this started the trend of science fiction films and also narrative in films. कहानी सिंपल है, साइंटिस्ट जो है मून पे जाने की तैयारी करते हैं, एंड में रॉकेट लॉन्च करके इट रीचेस द मून. Now back then क्योंकि कैमरा मूवमेंट्स नहीं थे, so the camera would be placed in one position. हार्ड मिलते रहते. अब इसी के साथ The Life of Christ in the 10th theatre, right? He watched it so many times because he was fascinated by moving images. He had never seen something like that before. So इतनी बार वो फिल्म देखने लगे, he lost his eyesight for some time. Then of course he mortgaged everything that he had. He went to London, got himself trained in the art of making motion pictures, came back, and thus started the journey of Raja Harishchandra. Right? It released in 1913, और तब क्योंकि फीमेल्स को फिल्मों में या थिएटर में काम करने की इजाज़त नहीं थी, तो फाल्के had no choice but to cast male actors who then impersonated women in the film. His wife Saraswati Bai Phalke was the first editor that we had in Indian cinema. अब ये जो वर्जन है, ये 1913 के प्रिंट्स थे. ऐसा कहा जाता है कि वो they burned to ashes. So all that's left of the original film are these stills, and जो गिरगांव में है वहाँ इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म. ये सारे उस जमाने के टॉपमोस्ट डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स थे. दादा साहब फाल्के कहाँ जाओगे तो आपको ऊपर रंजीत मूवी लिखा हुआ नजर आए. That's Franz Osten. He was a German. अशोक कुमार की शुरुआत की जो 9 फिल्में थी वो सारी इन्होंने डायरेक्ट, एंड ही वर्कड अंडर हिमांशु राय, who was the founder of Bombay Pictures. Now when we talk of Himanshu Rai, we have to talk about international collaborations, right? आज हम जब Indian actors जो Hollywood में जाके काम करते हैं, right? When we think of them, Priyanka Chopra, Amrish Puri, because he worked in the Temple of Doom, Shabana Azmi Irfan, to name a few, are the names that come to our mind. उन्होंने वहाँ जाके उनकी फिल्मों में काम किया,
लेकिन हिमांशु राय, he went to Germany, got himself trained at UFA, and he made Indian films on foreign soil. Rather than working in international films, he made them on foreign soil. And he often collaborated with German technicians. So Frank Ruston was one of them. And then we have Joseph Berschen, who worked as a cameraman in Bombay Talkies. Unfortunately, when World War II started, because they were German and the establishment was British, so they were deported back to where they came from. Rai suffered a nervous breakdown due to the losses incurred and he passed away at the age of 42. His studio Bombay Talkies was located in Pala. रील चेंज होती थी और दूसरी रील लगाई जाती थी, तब भी ये म्यूजिक प्ले होता था बिकॉज द ऑडियंस वुड गेट बोर्ड और लोग अपनी अपनी फरमाइश सुनाते थे, तो वो उस हिसाब से एक प्रोड्यूसर थे हमारे इंडस्ट्री. एंड दैट्स डी एन संपत. इन्होंने जो फिल्म बनाई थी भक्त विदुर, ये हमारे कंट्री की पहली फिल्म थी जो बैंड की गई थी बाय दीज लैंग्वेज. एंड दैट्स आर.जी. तोरणे. इन्हें दादा साहब तोरणे कहा जाता है. कुंडलिक नाम का प्ले आया था जो इन्होंने 1912 में रिकॉर्ड किया था. सो बीच में ये एक डिबेट छिड़ गई थी कि शुड फाल्के बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा और शुड द क्रेडिट बी गिवन टू आर.जी. तोरणे. बट ऑफ कोर्स व्हाट आर.जी. तोरणे डिड was he recorded the play. He did not make a film from scratch, which Falke did, which is why Falke is called the father of Indian cinema. And yes, now over there, the production at Ranjit Movie Theatre. That's Kamla Bai and her mother Durga Bai were the first female actresses that Indian cinema had. इनके जो वंशज थे वो थे विक्रम गोखले. If you've heard Vikram Gokhle's name, yes. तो कमला बाई विक्रम गोखले की दादी थी और दुर्गा बाई his great grandmother. And that's Mandakini Falke, Falke's daughter, the first child actor that we had in Indian cinema. अब ये अगर आप ऐड पढ़ोगे, wanted cultured ladies only for leading role in भाई बहन. This might sound regressive today, but अगर आपने सुना होगा तो फिल्मों में अक्सर वही लोग जाते थे जिन्हें पैसा कमाना था, राइट? जिनके या तो माँ बाप गुजर जाते थे या फिर वो गरीब घर से आते थे. They wanted to make ends meet, hence they would work in films. So the producers, right, there was an article in Filmfare in the 1960s where 4 producers, Bimal Roy, Guru Dutt, Mehboob Khan and Shashidhar Mukherjee, they spoke on the need of newcomers in the industry. While talking about that, they also spoke of creating a perception जहाँ ये लोगों को पता चले कि अच्छे घर के लोग भी फिल्मों में काम कर सकते हैं and not just people जो to make ends meet वो लोग फिल्मों में काम करते हैं. आज भी एक परसेप्शन है कि अच्छे घर के लोग फिल्मों में काम नहीं करते एंड पीपल आर अ बिट रिलक्टेंट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क इन फिल्म्स बिकॉज द प्रोफेशन इज वेरी अनस्टेबल. यू आर हियर वन डे, यू मे नॉट बी देयर टुमारो. इन फैक्ट नसीरुद्दीन शाह, सो दिलीप कुमार had once told नसीरुद्दीन शाह, तुम भी अच्छे घर के हो, तुम फिल्मों में काम क्यों करना चाहते हो? To which Nasir wanted to tell him, sir, आप भी अच्छे घर के, why have you been working in films for so long? But obviously he didn't say that. अगर आप नोटिस करोगे तो इनमें से बहुत सी एक्ट्रेसेस जो है ये एंग्लो इंडियंस हैं क्योंकि तब ब्रिटिश रूल था हमारे कंट्री में. इनके रियल नेम्स ब्रैकेट में लिखे गए हैं पर स्क्रीन नेम्स बाहर लिखे गए. सो माधुरी वाज बेरिल क्लासन. सो दिस वाज एज अर्ली एज 1920s. And then of course he became a full-time producer at Bombay Talkies. That's V. Shantaram, founder of Prabhat and then Rajkamal Kalamandir. Prabhat is, today's FTII was erstwhile Prabhat Studios. He also started his career as an actor under Baburao Painter's Maharashtra Film Company, following which he and 4 people, they formed Prabhat in Kolhapur. But then the conditions there were not favourable and hence they moved down to Pune. That's Prithviraj Kapoor. He resembles Shashi Kapoor in this picture. He started his journey with silent films. He was part of India's first talkie, Alamara. Now that brings me to Master Vitthal. Now Master Vitthal was part of India's first talkie, Alamara. He was the lead and he was a superstar during the silent era. Now he worked with another company, with another film studio, and when he found out that Ardeshir Irani was making India's first talkie film, he breached his contract and he went to Ardeshir Irani to work with him. और ये मैं हूँ जो हमारे ज़माने के नहीं पुराने ज़माने के गाने सुन रही हूँ और सच में बहुत मज़ा आया मुझे सुनकर. बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स थे. ट्रेन्स की आवाज़ है उससे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती बिकॉज अंटिल देन ऐसी कोई टेक्नोलॉजी. Yeah, and that's a still from Gandhar. The only talkie film Dada Saib Phalke made, which also happened to be his last film.
right? Because if not, Raja Harishchandra would have simply remember him for. He didn't have a very successful career later. It was only उसके बाद उस सीन में क्या हुआ ये बताने के लिए बीच में सबटाइटल कार्ड आया, लेकिन अब क्योंकि बोलने वाली फिल्मों का दौर शुरू हुआ तो a lot of regional industries started coming up. Marathi, Punjabi, the first Punjabi film came out in 1935, Sheila Pind Di Kuli, जिस फिल्म से नूर जहान ने अपना डेब्यू किया. Now Noor Jahan moved to Pakistan in 1946. That's Noor Jahan over there. And Noor Jahan is called Pakistan's Malika Tarannum or Night Animal because she started their music industry from scratch. Along Kolkata, they made Indra Sabha, the film, which had 69 songs. हालांकि दुर्गा पोटे जो इस फिल्म में एक्ट्रेस थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उसमें 72 सॉन्ग्स थे. So it's debatable whether it's 69, 70 or 72 songs. But nevertheless, सबसे ज़्यादा गाने होने वाली ये इकलौती फिल्म. And these are lobby cards, collectibles from back in the day. And over there we have information on how playback came into existence. So 1934 तक जो है silent फिल्में बन रही थी alongside talkies. But then silent फिल्मों का दौर था तो सिर्फ talkies ही बन रही थी. अब पहले जो एक्टर्स जो है उनके ऊपर माइक्स होते थे, म्यूजिशियंस सामने बैठते और वो लोग खुद ही गाना गाते. So अगर आपने अशोक कुमार की फिल्म अछूत करने का गाना सुना होगा, मैं मन की चिड़िया, so they're sitting on a tree, right? They're not moving at all because the camera is over there. So अगर वो मूव करेंगे तो उनकी आवाज़ बराबर से माइक्रोफोन में कैप्चर नहीं होगी. सामने उनके बैठी थी सरस्वती बाई, who was the first female music composer that we had, and she was with her, people, instrumentalists. वो म्यूजिक दे रही थी, कैमरा अशोक कुमार और देविका रानी पे था और वो गाना गा. लेकिन जो प्लेबैक सिंगिंग थी वो 1935 में, और उसका क्रेडिट जाता है नितिन बोस को, जिन्होंने भाग्य चक्र के थ्रू प्लेबैक सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया. Now over here we have a few hand painted posters and felt that this film should be banned. Unfortunately, we don't have any prints available of many of our early films. And yeah, that's Prem Sanyas, Himanshu Rai's film, directed by Frank Austin. And that's Alamara. And over here we have Achut Kanya, which was a story of an upper caste boy falling in love with a lower caste girl. And this was as early as 1936. And this film made 40,000 rupees at the box office. And this was directed by Frank Austin in Marathi. And that's Chetan Anand, Dev Anand's elder brother. And his film Neecha Nagar was the first film जो कांस में भेजी गई थी हमारे country से. And that's Kismat. That's Kismat, the first film that earned rupees 1 lakh at the box office. Now this was the time when Bombay Talkies की कमान जो थी वो अशोक कुमार के हाथों में competition because his contemporaries Vinod Khanna had moved to Oregon to be with Osho, and Rajesh Khanna's career was on the downfall because he was doing similar kind of roles, and by then the trend of romantic films had died down. So these stories, they connected with people, and Amitabh Bachchan became the man that he is today. Shatranj Ke Khiladi was the only feature film that Satyajit Ray made in Hindi, along with Sadgati. But Sadgati was a telefilm for Doordarshan. That's Bhumika, based on Hansa Wadkar's tell-all book Saunte Aita. Now Hansa Wadkar was a famous actress in the 40s of the Marathi film industry, and the film is based on her story and the challenges that she faced. Over here we have Junoon, directed by Shyam Benegal. This film is based on the 1857 uprising that took place. Now in the owner of Bombay Talkies, and during his time, Manto, Dev Anand and all these people, they were launched by Ashok Kumar when he got control of the studio. And इसी film का गाना था आएगा आने वाला, which catapulted Lata Mangeshkar to stardom and made her a household. And this is for Oscars from India. They're all surrounding poverty apparently. The third film, of course, being Lagan. Single screen theatres are deteriorated. एंड लोगों ने जो है थिएटर्स में जाना बंद कर दिया था, कम कर दिया था, और वो लोग टीवी पे फिल्में देखना प्रेफर करते थे. बरजातियाज ने जब ये फिल्म रिलीज़ की तो सिर्फ सिलेक्टिव थिएटर्स में रिलीज़ की. जैसे जैसे फिल्म की डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे वो थिएटर्स को फिल्म सप्लाई करते गए, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी, जब तक आप अपनी थिएटर्स की कंडीशन नहीं सुधारोगे वी विल नॉट गिव यू द फिल्म.
So of course they had no other choice because people wanted to see हम आपके आइकॉन. और थिएटर्स की कंडीशन सुधरी, लोगों ने थिएटर्स में जाना फिर से शुरू किया. The film earned a lot of money. In fact, you should watch his interview with Anupama Chopra where they've specified the box office collections. It's humongous, the collections that the film made. Cassettes के बारे में भी अगर हम बात करें तो कैसेट्स भी उन्होंने सिलेक्टिव ही रिलीज की कि ताकि पायरेसी की प्रॉब्लम आगे चल के ना हो. And it worked wonders for them. और यहाँ पे फिर से मैं आ गई हूँ, जो मैं गांधी जी की वॉइस सुन रही हूँ. में टूरिंग टॉकीज होते हैं. वॉट स्वदेश जो गाना है ये तारा वो तारा, उसके पहले टूरिंग टॉकीज का आना, विलेज में, ऑल ऑफ दैट. ये जो फिल्म है ये इट्स अ मराठी फिल्म एंड ऐसी फिल्में जो माइथोलॉजिकल या कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होती थी वो इन्हीं रीजन्स पे रिलीज होती थी, द रूरल रीजन्स, फॉर द सिंपल रीज़न कि वहाँ पे प्रॉपर थिएटर्स थे नहीं. और तो एंड दीज फिल्म्स वुड वर्क फॉर दैट ऑडियंस, सो दे आर मेड स्पेसिफिकली वही के लोगों की. तो मिलिंद गवई करके एक एक्टर है मराठी में, हाँ, सो ही इज़ कॉल्ड रूरल महाराष्ट्र का सुपरस्टार फॉर द सिंपल रीज़न कि उन्होंने ऐसी ही टाइप की फिल्में की एंड इट वर्कड फॉर पीपल इन दैट रीजन. ऑफ कोर्स नाउ वी हैव थिएटर्स कमिंग अप इन दोज रीजन्स एज वेल. फेस्टिवल के लिए उस ज़माने की कुछ एड्स यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं, पोस्टर्स. सो फिल्म इंडिया में बिकॉज इट वाज एट दैट इट केम आउट बैक इन द 30s and 40s, sometimes it is very difficult to distinguish between an article and an advertisement. So यहाँ पे सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही. बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, आपने पूरा व्लॉग देखा. प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे. थैंक यू.